Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथिरे मु ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु प्लस थ्री CBCS फिजिक्स ऑनर्स जीई और MSc फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस अपलोड करुच्ची जदि भल लगिला ताले वीडियोस को लाइक करदेव और चैनल को सब्सक्राइब करदेव यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाई बेल आइकन को एटी ऑल रे सेट करदेव तापर वीडियोज रो क्लैरिटी बढ़ाई गो टू सेटिंग्स क्वालिटी एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन सबू वीडियोज पाई पीडीएफ नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तापरे मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एच पार सिलेबस सजाई की रखिथिबी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट एठी सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस ए विषय रे पढिबा सो ऑर्थोगोनलाइजेशन माने एक्चुअली यही प्रोसेस रे आमे गोटे सेट पाइबा हैविंग ऑर्थोगोनल एंड ऑल्सो इनफैक्ट इट विल बी ऑर्थोनॉर्मल माने ऑर्थोगोनल प्लस नॉर्मलाइज्ड वेक्टर्स फॉर ए सेट ऑफ नॉर्मल ऑर्थोगोनल बट लिनियरली इंडिपेंडेंट वंस ओके सो सपोज आमे कंसीडर करिबा गोटे सेट ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स u1 u2 up to suppose un finite number which are not necessarily orthogonal suppose and it is required to obtain another set of orthogonal vectors suppose v1 v2 vn ए सब वेक्टर एबे सेकंड सेट टा होची orthogonal starting from the original set of vectors ओके एटा होची ओरिजिनल टा ए थ्रू हमें स्टार्ट करिबा आ orthogonal set गुटे पाइबा this one so this procedure due to the Schmidt orthogonalization method is as follows. Number 1, we choose v1 equal to u1. First element को हमें समान नबा तापरे second element देखो v2 equal to u2 minus a21 v1. So a21 माने obviously it will be a constant which is to be determined from the condition that v2 is orthogonal to v1. That means यार scalar product हिजिबो केते 0 because orthogonal अछि now taking the scalar product of v1 and v2 and thereafter equating to 0 काहे कि because orthogonal so एटा हमें देला equate करला 0 सहित तापर v2 रो value को हमें एठी पुट कला okay and we move on calculating this and we find out the value of a21 to be equal to v1 u2 by v1 v1 okay thus now we have two orthogonal vectors which is v1 and v2 okay so eta बाहरी गला first constant similarly एबे third vector को जीवा v3 याको हमें लिखि परिबा u3 minus a32 v2 minus a31 v1 so एठी a32 और a31 are again two constants which are to be determined again from the orthogonality condition of v3 with v1 and v2 so orthogonality condition हमें पुट कला देखो एटी v1 v2 को इक्वेट कला 0 सहित we put the value and similarly we find out the value of now a32 and a31 रो value एतिकी आसिला ओके आउ तापरे v3 v2 एटा भी orthogonal रहउची so इक्वेट करिबा 0 सहित we find out the value of a32 which is this much v2 u3 by v2 v2 okay so equation दुईटा हमें पाइला for the respective constant values which represents the values of the coefficient जोटा कि constant a31 आउ a32 याको एबे हमें ऊपरे पुट करि परिबा so that हमें mutually orthogonal vectors एबे तीनटा पाइ गला v1 v2 and v3 so एई भलिया हमें प्रोसेस को similarly जदि continue करिबा we can obtain all the elements of the orthogonal set that is v1 v2 up to vn okay so in general जदि हमें ith element नेबा suppose vi ताले याको हमें एक्सप्रेस करिबा in this format which is ui minus ai1 v1 minus ai2 v2 dot 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 minus ai I minus 1 vi minus 1 okay this is the format and here the coefficient ai1 ai2 ai minus 1 okay and remember aij हमें यही भलिया नउछु such that 1 is less than or equal to j less than or equal to I minus 1
ओके सो ये सब कोफिशिएंट्स को आम डिटरमाइन करवा फ्रॉम अगेन द ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन of Vi with respect to the preceding elements, that is V1 V2 up to Vi minus 1. ओके सो ये आम कोफिशिएंट पाइबा Aij टू बी इक्वल टू से फॉर्मेट जमी आम ऊपर बाहर सो Vj Ui by Vj. Okay, so finally all the vectors, that is the orthogonal vectors V1 V2 up to Vn, can be now normalized in order to obtain the orthonormal set, that is xi. So for example, good vector jodi ame neba xi, it will be normalized by dividing it with its length. So xi को ame likhi dela suppose vi by vi to the power half, माने एटा स्क्वायर रूट नहीं गला तार मैग्नीट्यूड आमे जेमती नो जो यूनिट वेक्टर जेमती बाहर करू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड करू से भलिया सो vi बाय या को एठी आमे समेशन रे नेला स्केलर प्रोडक्ट को समेशन I इक्वल टू 1 to n vi square to the power half. Okay, acha, so up to this I have taken the Schmidt orthogonalization process from one book. Now you can see this I have taken from another book which has given in a detailed manner, in a systematic manner. Say what ଜିନିଷ ହିଁ ଅଛି, you can read it also from the second book. In addition to that ଏଠି ଦୁଇଟା example ଦେଇଛି ଦେଖ ଏଠି example number 9 you can see ଏଠି କହୁଛି consider the following linearly independent set of n tuples psi 1 ର value ଦେଇଛି ତାପରେ psi 2 then phi 3 phi n sorry psi n. Okay, ताले this set is not orthogonal. Okay, so using the Schmidt orthogonalization procedure, so एठी आमे एई जो प्रोसीजर को ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसीजर मध्ये कहि परिबा. We can construct an orthogonal set out of this as follows. So एठी I think टिके प्रिंटिंग मिस्टेक लागुची, this should be psi 3 not phi 3. Okay, से जा भी हो, so suppose आमे नुआ orthogonal set पाइबा as phi 1 dash phi 2 dash and so on. So phi 1 dash को हमें simply तो प्रथम जो wave vector अच्छी psi 1 सहित equate कर देला, we are getting this much, then phi 2 dash. Okay, so एठी एई बही रे कोन करची आमे जो फर्स्ट बुक रे देखुथिला एई जगह रे माइनस थिला एठी प्लस नउची. ओके, से जा भी हो सेम जिन सब बिकॉज कांस्टेंट अछि तो माइनस नियो प्लस नियो. ओके, दैट विल नॉट अफेक्ट. सो phi 2 dash रो वैल्यू हेगला psi 2 plus c21 phi 1 dash, and we calculate the value of c21 after putting the value of phi 1 dash from this one. याकू आमे पुट करिबा psi 2 रो वैल्यू ऑलरेडी देइछि याकू भी पुट करिबा. सो c21 रो वैल्यू again this ratio which is found out to be equal to -1 ताकू पुट करिबा so that phi 2 dash रो वैल्यू आमे पाई गला. ओके, तापरे we move on to calculate the value of phi 3 dash. Okay, phi 3 dash से भले आमे बाहर कला दुईटा कांस्टेंट आसीबो c32 and c31 यार वैल्यू भी -1 आसीला. Okay, so phi 3 dash रो वैल्यू भी मध्ये आमे पाई गला. Okay, so in this manner we can get all the values of the coefficient. Okay, so आमे प्रथम तीनटा तो वेव वेक्टर एठी आमे phi 1 dash phi 2 dash पाई गला. सिमिलरली phi n dash देखो सेम वे रे ही आछि, प्रथमे 1 बाकी सब 0, phi 2 dash पई 0 सेकंड टा 1 बाकी सब 0. Okay, तापरे phi n dash पई लास्ट टर्म the nth term will be 1. Okay, so each member of the set happens to be normalized. Okay, so it will be an orthonormal set. Now coming to the second problem, example number 10. The set of all real polynomials of degree less than n in the interval -1 to +1 भितरे will form a linear vector space over a real field. Okay, and this space it will be n dimensional, and a convenient basis is formed by the set एठी दउची psi 1 equal to 1, psi 2 equal to x, psi 3 equal to x square, psi n equal to x to the power n minus 1 ए भले यार सेट टा आसिला. Now if the scalar product in the space is defined as suppose randomly हमें कहला psi I psi j याको इंटीग्रेशन लगेला -1 to +1 psi I psi j dx, it is easily verified that the basis set psi 1 psi 2 up to psi n will not be orthogonal, and we can construct an orthogonal set out of this by using
the Gram-Schmidt orthogonalization process. Similarly same way रे आमे जिबा phi 1 dash जोटा कि नुआ वेक्टर orthogonal वेक्टर रो याको इक्वेट करिबा psi 1 सहित it is equal to 1 तापर phi 2 dash which is this much जोटा आमे फॉर्मूला लगेला so x plus c21 रो वैल्यू बाहर करिबा by using the condition जोटा एठी देइछि ओके सो एटा हला हमर orthogonalization condition ओके c21 रो वैल्यू देखो आसी जाउछि 0 ओके ताले phi 2 dash हिगला केते x ओके तापर phi 3 dash बाहर करिबा दुईटा कांस्टेंट एबे आसीबो c31 c32 which are found out to be c32 रो वैल्यू आसिला 0 आउ c31 it is non zero एटा आछि -1/3 ताले phi 3 dash एबे आछि चेंज हैला देखो x square minus 1/3 so other members of the set can be easily obtained in the similar way so it should be noted that except for overall normalization factors the polynomials thus obtained are actually the Legendre polynomials okay so this is all about the Schmidt orthogonalization process. Thank you.